Good morning, my dear students of class 2. Welcome back to your English literature class. Today we will do the last lesson for the final syllabus. Today we will do the last lesson for the final syllabus, and the lesson is chapter 15, a play based on Jataka tale. A play based on Jataka tale. And this is a scene of a forest. A hare was resting under a coconut tree. He had a bad dream. He felt scared and got up. Okay, now this is a scene of a forest. Okay, and there was a hare. There was a hare. Hare is something like is an animal, something like a rabbit. Okay, and it was resting under a coconut tree. It was resting under a coconut tree. He had a bad dream. Do you have bad dreams? I'm sure you have bad dreams, and you get up suddenly and you are afraid and you look for your parents. Okay, and the same way this hare also had a bad dream. उसको एक बहुत बुरा सपना आया. He felt scared. Scared means afraid. Scared means afraid, and got up. Okay, now let's see what happened next. And hare, what did the hare say? What would happen to me if the earth were to break into pieces? And the hare, when he saw this dream and this bad dream, and he got up, उसने एक ड्रीम देखा, वो उठ गया. फिर उसने अपने आप में सोचा कि what would happen to me if the earth were to break into pieces. क्या होगा अगर ये अर्थ जो है जहाँ मैं रहता हूँ वो pieces में टूट जाए. What if? Then suddenly there was a thud. There was a thud followed by a rumbling sound. Thud is also a sound like something is falling from above, and it comes to the ground with a loud sound, thud. Okay, and suddenly he heard a sound followed by a rumbling sound. And what do you mean by rumbling? Rumbling means loud sound of thunder. Rumbling means loud sound of thunder. Okay, now let's see what happened next. Hare, it's happened, the earth is breaking. And just few minutes ago this hare saw a bad dream that the earth is breaking into pieces, and suddenly he hears this thud sound by a rumbling sound, and he's thinking, okay, now it has happened, the earth is breaking. कई बार आप सपना देखते होंगे और आपको लगता होगा कि वैसा ही ना हो जाए. ओके, आपने कोई डरावना सपना देखा, फिर आपको लगा कि कोई हमारे घर आ गया, कुछ हो गया है, और फिर अगर वैसा ही होना लगे तो आपको डर लग जाएगा क्योंकि आपने जस्ट इससे पहले सपना देखा है. तो वैसे ही ये हेयर भी डर गया. एंड व्हाट डिड ही डू आफ्टर ही गॉट स्कैर्ड? व्हाट डिड ही डू? ही जम्प्ड अप एंड रैन. वो उठा और भाग गया. अनदर हेयर, what did the another hare do? Why are you running? Now this whole scene is of a forest. ये forest का एक scene है. So there are different animals. Okay, now right now we are talking about a hare. Now another hare comes. Why are you running? And this hare asked the first hare, why are you running? तुम क्यों भाग रहे हो? First hare, the earth is breaking up, you should run too. The second hare also start running. और जो first hare था, जो second hare था, उसने first hare से पूछा तुम क्यों भाग रहे हो? Why are you running? And the first hare said because the earth is breaking, क्योंकि earth जो है pieces में टूट रहा है, चलो तुम भी भागो. और उसने कुछ सोचा नहीं, कुछ और पूछा नहीं, कुछ चेक नहीं किया. एंड ही ऑल्सो, द सेकेंड हेयर ऑल्सो स्टार्टेड रनिंग. बोथ ऑफ देम स्टार्टेड रनिंग. Second hare, look at that, the earth is breaking up, the earth is breaking up. And the second hare also got so afraid, and he also started shouting and running, the earth is breaking, the earth is breaking. earth टूट रहा है, हमारी पृथ्वी जो है वो टूट रही है. Now let's see what the other animals did. Other animals, the earth is breaking up, the earth is breaking up. And other animals also started screaming and shouting कि earth टूट रहा है, the earth is breaking up. Reptiles, insects,
birds and four-footed animals started running after the hares, and their cries of terror filled the air. What other animals were there who were running after the hare? After the hare? Now this is not that hair, baal wala hair nahi, okay? That is HAIR. This is HARE. This is an animal. This is an animal just like a rabbit. Okay, and now the other animals were reptiles. What are reptiles? You should find out what are reptiles are, like crocodiles and animals that stay in water and also they stay on land. Insects, birds and four-footed animals started running after the hares, and their cries of terror filled the air. What do you mean by terror? Terror means great fear. जब आप एक बड़ी सी भीड़ को चिल्लाते हुए देखते हैं और वो कुछ नारा लगा रहे होते हैं, कुछ चिल्ला रहे होते हैं, क्या आपको डर लग जाता है? डू यू गेट अफ्रेड? डू यू गेट स्केर्ड व्हेन यू hear a sound of a crowd shouting and running? Do you get scared? Yes, in the same way all the animals just got scared when they heard the hare running and screaming, the earth is breaking. Everybody started thinking that the earth is breaking. Now let's turn the page and see what happened next. Lion saw the animals. A lion saw the animals coming and stood in front of them. Now there was a lion. The lion, well, who is a lion? Lion is the king of the jungle. So this lion saw the animals coming and stood in front of them. Lion, stop, stop. The animals stop. Lion, what happened? Why are you all running? Now this lion was very smart and wise, and he said to all the other animals, why are you running? Stop, stop. और उसी समय एक लायन आ जाता है और वो देख रहा है कि सारे एनिमल्स इधर उधर भाग रहे हैं और उनसे कहता है स्टॉप स्टॉप, रुको रुको, तुम लोग क्यों भाग रहे हो? एंड लेट्स सी व्हाट द पैरट सेज. द अर्थ इज ब्रेकिंग अप. लायन, हु सेज सो? द पैरट ने कहा, तोते ने कहा कि अर्थ जो है टूट रहा है, हमारी पृथ्वी टूट रही है. द लायन इज आस्किंग हु सेज सो? किसने कहा? पैरट, आई हर्ड इट फ्रॉम द मंकीज. Lion, you said so. So the parrot ने क्या कहा? What did the parrot say? That I heard it from the monkeys. The monkeys were shouting, the earth is breaking up, the earth is breaking up. So I also started shouting. तो उस parrot ने कहा कि सब monkeys चिल्ला रहे थे कि पृथ्वी टूट रही है, earth is breaking up, तो मैंने भी चिल्लाना शुरू किया. So the lion said, you said it so. तो लायन ने पैरट से कहा तुम ही तो कह रहे हो. Monkeys, what did now? Monkeys, the lion asked the monkeys, we heard it from the tigers. Now the monkey said, हमने तो टाइगर से सुना. Lion, you said so. And now he's asking, जो जिसका नाम ले रहा है lion उससे पूछता जा रहा है. सबसे पहले the first all the animals were coming. The lion said stop. The animals stopped. The lion asked, what happened? Why are you all running? The parrot said, the earth is breaking up. Lion, who says so? Parrot, I heard it from the monkeys. Then the lion asked the parrot, then the lion asked the monkey, you said so? क्या तुम कह रहे हो? The monkeys said, monkeys ने कहा, we heard it from the tigers. Then the lion asked the tiger, you said it so? क्या तुमने कहा? And again and let's see what the tigers said. Tigers, an elephant told us. Lion, now the lion asked the elephant, you said so? क्या तुमने कहा? Elephant, the buffaloes told us. Then the lion said, so you said so. Buffaloes said, the hares. Lion, you said so. The hares pointed to each other. Second hare, I heard it from my friend. The first hare, trembling fear, it was I, your majesty. And ऐसे होते from parrot to monkeys, from monkeys to tigers, from tigers to elephant, from elephant to buffaloes, from buffaloes to hares. Okay, from buffaloes to hares. Buffaloes ने कहा हमने तो hares सुना, hares चिल्ला रहे हैं कि भागो भागो, the earth is breaking up, पृथ्वी हमारी टूट रही है. And then there were two hares, okay, and they both pointed at each other. उन दोनों hares ने एक दूसरे की तरफ point किया. And the first hare said, जिसने शुरू किया था, the first hare said, it was I, your majesty. And this first hare,
He said, हाँ हाँ मैंने कहा था. Now let's see what happened further. Lion, what makes you think the earth is breaking up? Now the lion asked the first hare, जिसने शुरू किया था, the one who started all this. I heard it cracking with my own ears, sir. What do you mean by cracking? Cracking means breaking. Cracking means breaking. And what did the first hare say? I heard it cracking with my own ears, sir. मैंने अपने कानों से सुना कि वो टूट रहा है. Lion, let us see what made that sound. तो लायन ने कहा चलो हम देखते हैं किस चीज़ ने ये क्रैकिंग साउंड, ये तोड़ने वाली ब्रेकिंग साउंड किस चीज़ ने निकाली. Now all animals went to the coconut tree. They found that they found that the sound had been caused by a large coconut falling from the tree. Oh no, it had landed on a pile of rocks, causing the rumbling sound. The hare looked foolishly at everyone. Now see what happened. Now all the animals and the lion went to the near the coconut tree where the hare was sleeping, and they found that the sound had been caused by a large coconut falling. और sound कैसे निकली? The sound came when the coconut fell from the coconut tree and fell on some and a pile of rocks. और वो कुछ पत्थरों के ऊपर वो कोकोनट, वो नारियल, वो गिरा और उसकी वजह से that made that rumbling sound, उसकी वजह से वो टूटने का वो आवाज़ आई. और उसे जस्ट पहले हेयर ने जो था एक सपना देखा था. he had seen a dream, so he thought that oh, the earth is breaking, but actually it was the coconut cracking sound. The hare looked foolishly at everyone. और वो हेयर जो है सारे एनिमल्स की तरफ देखने लगा, उसको बड़ा दुख लगा. हेयर, सॉरी फॉर स्केयरिंग यू. नाउ द हेयर सेड टू ऑल द एनिमल्स, सॉरी फॉर स्केयरिंग यू, मुझे माफ़ करिए, मैंने आप सबको डरा दिया. लायन, गो बैक टू योर होम्स, द अर्थ safe. Next time, check what others say before acting on it. And what did the lion say? Go back to your homes. The earth's safe. अपने घर सब वापस जाइए, अर्थ बिल्कुल ठीक है. नेक्स्ट टाइम चेक व्हाट अदर्स से बिफोर यू एक्ट ऑन इट. और नेक्स्ट टाइम इससे पहले कोई कुछ कहे आप उसको चेक करिए, देखिए कि सच में ऐसा है भी कि नहीं है. Okay, so what do you learn from this story, children? We learn that you should not listen or hear to rumors. हमें अफवाहों को नहीं सुनना चाहिए. इन दिनों में, previous days, during the lockdown, we heard many rumors about coronavirus and many other things. Okay, हमने बहुत से rumors को, अफवाहों को सुना कोरोना वायरस को लेकर. और वो जो rumors, what do you mean by rumors? रूमर्स मीन्स अफवाहें, गलत इन्फॉर्मेशन जो कई बार व्हाट्सएप पे आती. मैनी रॉन्ग फेक न्यूज़ कम्स ऑन व्हाट्सएप. यू शुड फर्स्ट चेक इट एंड देन यू शुड फॉरवर्ड इट. फर्स्ट, वेन एवर यू गेट एन इन्फॉर्मेशन ऑन व्हाट्सएप, ऑन मैसेजेस, आपको कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है, आपको कोई आपका फ्रेंड आके कुछ बता रहा है, पता है वहाँ पे ऐसा ऐसा हुआ था, और या आपके व्हाट्सएप पे कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है, फर्स्ट चेक इट, उसको चेक करिए, फिर दूसरों को फॉरवर्ड करिए. बिना सोचे समझे किसी भी अफवाह पर, किसी की कही हुई बात पर विश्वास मत करिए. एंड समटाइम्स मैनी रिलेशनशिप्स ब्रेक, बहुत सी फ्रेंडशिप्स टूट जाती हैं क्योंकि किसी ने हमसे किसी की कोई बुराई कर दी और हमने उसके ऊपर विश्वास कर लिया. मैनी टाइम्स व्हाट हैपन्स व्हेन यू आर गुड फ्रेंड्स विद समवन, सम अदर थर्ड पर्सन कम्स एंड से समथिंग बैड अबाउट योर फ्रेंड एंड यू थिंक, oh, now my friend is not good, and you leave your friendship, you break your friendship. Now that is not true. You have to confirm. आपको चेक करना है कि whether ये बात मेरी फ्रेंड ने कही है कि नहीं कही मेरे बारे में. You should go and confront, you should go and ask, सुनो तुमने क्या मेरे बारे में ऐसा बोला? और वो अगर वो आपका फ्रेंड कहे नहीं मैंने तो ऐसा नहीं बोला, तो आपको कंफर्म करना है. किसी की कही हुई बात को ऐसे ही मत विश्वास कर लिए. जो डोंट जस्ट बिलीव इन रूमर्स, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. ओके चिल्ड्रन, यू हैव टू लर्न दिस थिंग फ्रॉम दिस लेसन. Don't believe in any fake news, any wrong news, any rumor. Okay,
जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर आप गलत न्यूज़ को, गलत इन्फॉर्मेशन को पास ऑन करेंगे, उसकी वजह से बहुत हमारे कंट्री में, हम आपके घर में बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। सो when somebody tells you something, you get a message on your WhatsApp, or you get a text message, first confirm it and then forward it. All through this lockdown I got many messages, मुझे बहुत से messages आए और बहुत से ऐसे pictures आई, photos आई कोरोना वायरस के ऊपर। बट आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ, मैं आपको सच सच बता रही हूँ कि उसमें से आधे से ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन थी, दे वर ऑल रॉन्ग. Most of the news, most of the things, the information that was given was wrong. I always used to check on Google. मैं हमेशा गूगल पे जाके चेक करती थी क्या सचमुच में ऐसा है, और मुझे पता चला ऐसा तो नहीं है. एक र्यूमर आया था, एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आई कि एयर में भी कोरोना वायरस ठहर जाता है, कोरोना वायरस एयर में भी रह जाता है. पर मैंने उसको चेक किया एंड दैट इन्फॉर्मेशन वॉज फेक, वो फेक इन्फॉर्मेशन थी. सो रिमेंबर चिल्ड्रन, before you tell something to somebody, be confirmed, be sure what you are telling, what your information you are giving, it is true, okay, or whatever you are believing is true. Okay children, God bless you. Now this was the last lesson of your this final syllabus. Okay, now we will do one poem later on. God bless you and take care.